Good afternoon, sir. Am Good I afternoon, audible? Manish sir. Yes, sir, you're audible. Good afternoon, Manish sir. Am I audible? Abhijeet, sir. I Yes, think sir. we should start the session now. Yes, sir. So, am I audible? So first, I would like to take opportunity to welcome you on the behalf of Ministry of Education Innovation Cell, Institutions Innovation Council, Banaras Hindu University. So today we are discussing on ecosystem enablers for the entrepreneurship and innovation. So I am going to hand over this session to you to continue. Please, sir, continue with your words. Thank you so much, sir. I want to thank Dr. Manish Arora, Coordinator, Design Innovation Center, BHU, for providing me this opportunity to interact on the topic startup enablers. Let me first share my presentation. So, can you see my screen? Yes, sir. Okay, thank you. So, let's start the discussion. So the topic which was allotted to me was innovation startup ecosystem enablers. So let's proceed. So this is how the flow of the presentation is. First, I'll be starting this uh, discussion with a small introduction about the MSME sector because there's a lot of confusion between what are MSMEs, what are startups, are they same, is there any difference between these two? So let's have a small discussion on that and then we should proceed. Then how startup and MSMEs are they different? We'll differentiate them on various parameters and see how they are different and to what extent they are similar. Then we'll come to the central premise why there is a need for promoting MSMEs or promoting entrepreneurial culture or promoting startups in India. So I'll discuss the problem, then come to the solution and what is the way out of this predicament. Then if you talk about startups, you talk about MSMEs, then you cannot take out the word entrepreneurs from there. So what it takes to become a successful entrepreneur, what are the personality traits that are required? Are those personality traits inherent or they can be learned over time? So that we'll have discussion on that as well. Then finally we'll come to the main topic, that is what are startup enablers, what are the part of that, then actually what is the overall startup ecosystem, what are the players there and how it is excelling in India. Then there is a lot of buzz going around the unicorns, what are the driving force behind unicorns. We'll have a small discussion on that, and finally I'll conclude uh, the oral presentation and see what are the pros and cons and how is the future going to be there. Okay, so with these words, let's start the presentation. Okay, so starting with the basic introduction about the MSME sector. Okay, so MSMEs have been globally acknowledged as instruments for achieving economic growth and development. So micro, small, and medium enterprises, they are considered as the nurseries of entrepreneurship, and they are considered as the engines for growth. So they have marked their presence across all the major sectors of the economy, and they provide or produce a diverse range of products. So vital role of MSMEs in employment generation. So if we talk about the MSMEs, they play a very vital role in the economy of any country, be it India, be it any other nation in the world. So they are the second largest employment provider just after agriculture in our country. In fact, they have played a very important role in the transition of India's economy from an agrarian based economy to a industrialized one. So at one point of time our economy was primarily based on agricultural activities, but slowly it's now moving towards the industrialized products as well because of the MSME sector. Significant contribution in the economy of India. Now let's have some facts and figures. So MSME sector is responsible for 40% of exports and 45% of the total manufacturing output from our country. And if we talk about the GDP contribution of this sector, so that is around 8%, and they constitute more than 90% of the total enterprise. So that's a huge percentage.
and therefore their significant role in the economy of India, it cannot be overlooked, it cannot be neglected. And finally, they have shown a remarkable growth over the last decade. If we take last decade or maybe the last 20 years, so the MSME sector has shown a tremendous growth. And this was just after the MSMED Act, which was implemented in 2006. And the main advantage of this sector is that they provide a large employment at a very low capital cost. So that's the biggest advantage. You don't need a lot of funds. You don't need funds in crores and all to start a unit. It can be started at a very basic level. So the labor intensity of MSMEs is much higher than that of the large enterprises. And in the last few years, the growth rate of the MSMEs is actually more than the overall industrial sector in India. So when talking about few of the features of this, so they have quick responsiveness, they are adaptable, and because of this, they have shown a commendable endurance to this recession as well. So that's about the MSME sector. So let's move further. Okay, now classification of MSMEs. So the diagram, the chart that is in front of you, this basically sums up the MSMED Act 2006, and this was in practice till 30th June 2020. So the year in which there was the COVID, and then from 1st of July 2020, we had a different segregation of MSMEs. The definitions and all were changed. So this was there for almost 15 14 15 years. So let's have a discussion on this, and then let's see how the new norms were there, the new classification are there. So as per the MSMED Act, the criteria here was investment in plant and machinery. So plant and machinery in case if it's a manufacturing sector, and equipment if it's a service in the service sector. So that was the basic categorization. Here you had two different things. One was the manufacturing and one was the services. So for micro enterprises, if the investment in plant and machinery was up to 25 lakhs, so it was micro enterprises. If it's between 25 lakhs to 5 crores, it's a small one. If it's between 5 crores to 10 crores, it's a medium one. And talking about the service sector, if it's up to 10 lakhs investment in equipments here, so that's a micro enterprise. Then 10 lakhs to 2 crores, it's a small enterprise. 2 crores to 5 crores, it's a medium enterprise. So that was as per the MSME Act, which was there till 30th June 2020. Now let's see the new classification of MSMEs, which came into effect from 1st of July 2020. So this has been there for exactly, I think today is 2nd July, so 2 years. So now here we have this composite criteria. So previously we had only investment in plant and machinery. So now here they have included the annual turnover as well while defining the MSMEs. And there is no segregation between the like manufacturing sector and service sector here. So they have clubbed it together, and this is a more broad classification, you can say. And if you see the figures in rupees, which the ceilings they have kept, they have actually increased the ceiling, so they have increased the scope here. So talking about the micro enterprises, whether it's a manufacturing, whether it is a service, it doesn't matter. So investment in plant and machinery equipment not more than 1 crore, and annual turnover not more than 5 crores. You see, even for the micro enterprises, they have raised this one. So this is going to 1 crore, which was initially very less. It was initially 25 lakhs. So there's a increase of 75 lakhs. Okay. So similarly, for small enterprises, investment in plant and machinery or equipment is not more than 10 crores, and the annual turnover is not more than 50 crores. And the for medium one, investment in plant and machinery. Uh, am I audible? Yes, sir. Yeah, someone just message. Okay, so for medium, just if I'm not audible, just someone just inform. Okay, so talking about the medium, investment in plant and machinery or equipment, it's not more than 50 crores, and the annual turnover not more than 250 crores. So this is the new definition. You see the investment limits and all those things have increased significantly. Okay. So now we have seen that MSME sector has made a lot of contribution. They are very important for the economy, and all those things are there. But considering all those factors, there are some issues in MSME financing. Why? What is the challenge for a new
entrepreneur or a borrower, why it is difficult for them to access loans and all those things, that we will see in this. So what are the main major issues in the MSME financing? Okay, so the first one is access to funding is the backbone of any enterprise. So timely access to credit is actually vital for any enterprise. But when we talk about the MSMEs, they have very limited options to avail loan. They are not like big industries that they can immediately go for IPOs, they can go for debt instruments and all. They have very limited options to avail credit. So access to timely credit becomes more important for MSMEs. And because they need credit to purchase raw materials, manage their day-to-day activities and all those things. Okay, so that's the main reason. So cash crunch can have a major serious constraint, a serious impact on the productivity of the MSMEs as well. So that is why access to funding is the backbone of any enterprise. So that's the first thing. Then negative attitude of banks and financial institutions. So why this negative attitude? So banks and financial institutions, they tend to show a biased behavior. So when we compare MSMEs with that of the large enterprises, so talking about the large enterprises, they can easily avail bank credit for a longer term and at a relatively lower rate of interest. But when we talk about MSMEs, the banks charge high rate of interest, and this getting loans at reasonable terms, this is far from reality for the MSMEs. And now the major thing why this is happening is the third point sums up that is the opaqueness of MSMEs leads to strict lending norms. Why banks have that kind of attitude? That is because MSMEs operate in a very opaque manner. They are non-transparent. They don't have, most of the micro enterprises, they are not well versed with the financials and all those things. Financial literacy is also missing there, so they behave in an opaque manner. So banks actually they ask for transparent financials and all those things in order to judge the payback capability, in order to judge the credit worthiness on all those things. And in the absence of this, they charge high premiums from the borrowers or the MSME owners. So that is why this opaqueness. Now I'll discuss one more slide which actually sums up the issues in MSME financing, and that's the problem of information asymmetries. Now, what is information asymmetries? I think you all are aware of the word symmetry. Symmetry means almost equal. It's like equal everything. But when we talk about information asymmetries, that means ki let's talk about a situation in which there are two parties, and one party is having more information and the other party is having less information. So the party which is having less information, they might be at loss, they might be at a disadvantage. So that is what information asymmetries is all about. And this term is very common in terms of uh, in context of the bank loans. Whenever you go to a bank to take loans, so one party is the lender and one party is the borrower. Sometimes there may be situation that one party is having more information than the other party, so that might create information asymmetries. Because of information asymmetries, there are two problems which are very common in the banking sector. Whenever you uh, go to take a loan, or let's say is also prevalent in the insurance sector as well. So those two problems are moral hazard and adverse selection. So let's try to understand these two things with a very simple example. Someone again pointing out that I should speak in Hindi. So is English a problem? Shall I speak in Hindi? Yes, or Yes, English sir. is It will be good if we use mixed language. mixed, because there are certain terms which is very difficult to explain in Hindi. Like I don't know what is moral hazard, I don't know what is adverse selection. So I'm from a management background, so actually we are more used to these English terms and all those things. So getting I will use a bit of Hindi as well. Okay, wherever possible I'll use a bit of Hindi as well. Yes, yes, sir. Okay, so talking about this moral hazard, now let's try to understand this with a simple example. Moral hazard basically means that there is a change in behavior of an individual after a deal is struck. जैसे कि आपने कोई डील साइन कर लिया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया,
उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के बाद या उसके आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ जाना, दैट इज व्हाट इज moral hazard. It consists of two words. You see, one is your moral word is there. So moral hazard means there is a change in your behavior after a deal has been struck. Look, let's say I will give you a very simple example to understand this phenomena. Let's say आप ऐसे किसी एरिया में रहते हो जहां पे हर साल बाढ़ से आपका घर नदी के आसपास कहीं है और हर साल बाढ़ से आपका काफी नुकसान हो जाता है। तो आपको पता है कि हर साल मानसून में नदी का स्तर बढ़ेगा और आपका घर में पानी वगैरह आएंगे तो नुकसान होगा। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग सम प्रिकॉशंस और समथिंग। आप कुछ हमेशा कुछ ऊंची मिट्टी वगैरह लगा के रखेंगे वहां पे ताकि पानी घर में ना आए, खिड़कियों को दरवाजों को हमेशा बंद रखेंगे, और भी जो प्रिकॉशंस हो सकते हैं बाढ़ से बचने के लिए वो आप प्रिकॉशंस लेके रखेंगे ताकि बाढ़ के पानी से कम नुकसान हो। लेट्स से आपने कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली। अब इंश्योरेंस पॉलिसी will make you give you the compensation in case there is some damage because of the flood water. अब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के बाद आपका एटीट्यूड क्या हुआ, आप बहुत कैजुअल हो गए। जो प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेथड्स आप पहले लेते थे जब आपने इंश्योरेंस नहीं लिया था वो आप नहीं ले रहे हैं। अब आप जो मिट्टी वगैरह की बना के या बालू वगैरह लगा के रखते थे, बोरे वगैरह, वो आप नहीं रख रहे हैं ताकि पानी नहीं अंदर आए। वो खिड़की दरवाजे सारे आप हमेशा खोल के रखते हैं। तो जो प्रिवेंटिव मेथड आप पहले लेते थे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद, आप अब उसको नहीं ले रहे हो। सो देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर आफ्टर द डील हैज बीन स्ट्रक। दिस इज नोन एज मॉरल हैजार्ड। इज इट क्लियर? Yes, anyone confirm? Yes, sir. Okay, so now going to adverse selection. Okay, so adverse selection में क्या होता है? Let's say there are two individuals, Mr. A and Mr. B are two individuals. दो लोग हैं, एक Mr. A है, एक Mr. B है। अब दोनों लोगों को क्या करना है कि they both want to have a health insurance policy. अब मिस्टर ए इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड गाय। मिस्टर ए क्या है कि वो रेगुलर जिम जाते हैं, ही डजंट ड्रिंक्स, ही डजंट स्मोक्स, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। दैट इज अबाउट मिस्टर ए। ओके, मिस्टर बी क्या है कि मिस्टर बी इज वेरी कैजुअल। वो जिम भी नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, ही इज अ ड्रिंकर, ही टेक्स सिगरेट भी पीते हैं। तो सारी चीजें ये सारी मिस्टर बी के साथ है, लेकिन दोनों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अब जब दोनों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो फॉर्म उनको दिया जाता है जहां पे टिक करना होता है कि आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ये सारी चीजें। तो मिस्टर ए तो ट्रूली सारी चीज बता देते हैं कि ठीक है मैं नहीं करता हूँ। मिस्टर बी को लगता है कि अगर मैं ये सारी चीजें रिवील कर दूंगा तो मुझे अच्छे टर्म्स नहीं मिलेंगे कंपनी की तरफ से, तो वो उन चीजों को छुपा ले जाते हैं। अब एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन या ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे वो दोनों की हेल्थ ये सारी चीजों को अच्छे से चेक कर पाए। तो इस वजह से उन वो एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब कि वो मिस्टर ए मिस्टर बी को दोनों को अच्छे टर्म्स पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे देते हैं। तो वेन एवर यू टेक डिसीजन व्हेन यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड यू मेक एन एडवर्स चॉइस, दैट इज एग्जांपल ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। Is it clear? What is the difference between moral hazard and adverse selection? Yes. Is it clear how moral hazard and adverse selection are Yes, sir. different? Yeah. Okay. Now let's move to the next part. That is the startup versus MSME. That's the main part that we are going to discuss. Now there is a lot of confusion कि what is a startup, what is MSMEs, दोनों same होते हैं या दोनों different होते हैं? अगर difference है तो क्या difference है? So that is why I gave you a basic introduction about the MSME so that we can have a better understanding about the startups. So now talking about startups. So startup, or we say the startup company, they are the terms which are actually not very old, 3 to 4 decades old, and they have become more popular in this electronic era of internet. So this startup. एंड आई थिंक एमएसएमईज के बारे में हमने काफी डिस्कशन किया है। प्रीवियसली देवर वी यूज दिस खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, और जब माइक्रो एंटरप्राइजेस को नहीं इंक्लूड किया था देयर वाज ओनली एसएमई सेक्टर दैट इंक्लूड्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड 1969 दिस बैंकिंग, द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, वहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को डिफाइन किया गया।
तो वहां पे भी MSMEs को इंक्लूड किया गया. सो दे हैव अ मोर, if I talk about history, so they are more old. After independence, a lot of emphasis was given कि MSME सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको एक तरीके से ग्रो करने की सारी कोशिश वगैरह की जाए. So that is about MSMEs. Now, definition, we have already discussed what is MSMEs. Now, let's see how we define the startup. Startup क्या होता है? So, स्टार्टअप का एज सच कोई कंक्रीट डेफिनेशन तो नहीं है, बट इफ यू लुक एट द स्टैंड अप इंडिया वेबसाइट, सो वहां पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि it is something, startup is basically, or a company can be actually considered as a startup up to 10 years from the date of incorporation or registration, if it is incorporated as a private limited company or registered as a partnership firm or a limited liability partnership in India. So those are the conditions. That is the condition number one. Condition number two is if the turnover for any of the financial years since incorporation or registration has not exceeded 100 crores. So 100 crores के अंदर ही होना चाहिए for the 10 years. अगर वो 100 crores का मार्जिन पार कर जाता है तो फिर उसको स्टार्टअप नहीं करेंगे. And if it is working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, and if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. तो स्टार्टअप वर्ड से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें जुड़ती हैं. तो स्टार्टअप जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो am I audible? Okay. Sir. Yeah, okay, I'll continue. I think was having some network issues maybe. Okay, Okay, no problem. so I was discussing about the definition part is okay. Now let's talk about the registration, how the registration is done, and whether it is actually mandatory for startups or MSMEs to go for registration. So in India, there is no as such mandatory thing for the MSMEs or startups to go for registration. But again, if you go for registration, then definitely you are having a host of benefits. So as far as these startups are concerned, they are registered with the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. That's the body, that's the Government of India body, popularly known as DPIIT. And if they have been registered there, they get certain advantages in terms of tax and all those things. And when we talk about MSMEs, they need to be registered with the District Industry Center, and they get a lot of facilities and all those things if they get registered there. But again, it's not mandatory. Okay, but if you don't register, you don't get those benefits. That is why it's better to go for the registration. Now, common link between startup and MSMEs. So what is common between these two? Like both are set for businesses and both actually require enterprise. And definitely there is some element of risk in both. But
when we talk about startups, they are much more risky investment. Reason is because you are working on an idea that is actually new and untested, what already I discussed, which is not the case with MSMEs. MSMEs में आप एक कोई business already है, कुछ manufacturing unit आप डाल लो, ठीक है, wheat की industry डाल रहे हैं या कुछ ऐसा pickles का डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं ऐसा already जो garment industry डाल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है जिसमें already चीजें काम कर रही हैं, आप उसी को कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप में क्या होता है कि आप कुछ अनटेस्टेड, कुछ न्यू चीजों के साथ एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो वो कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, तो रिस्क एलिमेंट जो है स्टार्टअप्स में इज कंपेटिबली मच मोर देन दी ट्रेडिशनल एमएसएमईज यूनिट्स। ओके, वन मोर थिंग इज लाइक एमएसएमईज के केस में क्या होता है कि जो क्वालिफिकेशन है या जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी कहिए या चाहे नॉर्म, वो उतनी ज्यादा, एक साधारण इंसान भी या एक साधारण व्यक्ति भी एमएसएमईज को स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाईली एजुकेटेड होना होगा, बट यूजली व्हेन वी टॉक अबाउट, वन सेकेंड, हेलो हेलो सर, वो मैंने कॉल किया था, सेशन थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए कॉल किया था, अभी तो मैं ले रहा हूँ लेक्चर, ठीक है सर, ठीक ठीक, ओके ओके। Okay, so as far as the individuals who start these startups, in India, you see mostly engineers or people with technical background, they are going for these startups. But in MSMEs के केस में ऐसा नहीं है कि usually engineer से start करते हैं, वो कोई भी start कर सकता है। तो qualification wise, startups require a bit more than as compared to MSMEs. ठीक है? So then one like okay, then talking about the individuals or the uh, parties involved as far as the startups are concerned or the MSMEs are concerned. So startups, they begin with an idea which is basically supposedly it is innovative. They have a set of founders, they have a set of co-founders. It gets funded, सीड मनी जो होती है वो एंजल इन्वेस्टर्स देते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट देते हैं, प्राइवेट इक्विटी से आता है, एंड देन फाइनली अगर बिजनेस स्केल कर जाता है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ दिस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम की आईपीओ बोलते हैं, जहां पे आप कॉमन पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो आपके शेयर्स परचेज करने के लिए। डेट का जो पोर्शन होता है दैट मे बी थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो डेट की संभावना बहुत कम होती है। जो अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो इट हैज लो और नो डेट। यूजली ज्यादातर रिस्क जो होता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे लेते हैं। एमएसएमईज की बात करें जो ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं, यहाँ पे बेसिकली दे हैव अ डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। MSMEs have a different trajectory. They basically start with the popular factors of production, जिसमें हम लैंड की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। एमएसएमईज के साथ हम इन सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे यू हैव योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विद दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, देन यू गो टू अ बैंक, दे विल इवेलुएट इज इट फिजिबल, ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, उसकी बेसिस पे यू गेट द फंडिंग। तो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से, उसके बेसिस पे यू गेट फंडिंग। There are certain schemes also. I am not going into those schemes because a topic is for startups. MSMEs पे कुछ ऐसे schemes होते हैं, generally collateral मांगते हैं। बैंक्स में जाओगे तो they will ask for collateral. तो फॉर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव कोलैटरल। कोलैटरल वो नहीं दे सकता क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, ये नहीं है। तो देयर आर सर्टेन हैसल्स ऑफ कोलैटरल कहते हैं। तो कुछ कोलैटरल फ्री लोन्स भी आते हैं, जैसे कि एक स्कीम है CGT MSC, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, बट लेट्स कीप दैट aside. वो MSME is related, I'm not going into that. Okay. Now, there are certain keywords associated with startups, certain keywords associated with MSMEs. So let's see what are those keywords. जब startups की बात करते हैं तो we use the terms or we use the words idea, innovation, founder, co-founder, business plan, seed funding, angel investors, venture capital, private equity, business incubators, accelerators, startup ecosystems. ये सारे जो words हैं, keywords हैं, they are more associated with startups. For MSMEs, we have this word project report, who is the promoter, bank loan, debt कितना है, debt equity ratio कितना है, financial statements क्या है. So these are typically used for MSMEs.
Okay. Now, to sum up, or we can say the final verdict, what is startup, what is MSME? We can say that based on idea, based on innovation and the growth potential, startups can be considered as the new modified avatar, you can say, of the MSMEs. So that is traditionally, so that is, so they are not completely different, but yes, startups emphasize more on innovation, more on creativity. Okay. Then let's move further. Okay, so need for promoting startups and entrepreneurial culture in India. Now, this is the central premise. क्या जरूरत है कि हमको या गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स प्रमोट करना पड़ रहा है या entrepreneurial कल्चर प्रमोट करना पड़ रहा है? So there are various reasons. Let's look at the problem. So the rapidly growing population and the unemployability in India, they have an unfavorable influence on the growth and development of India, or not only in India, for any nation. So these are considered as the two vices. Vices mean आपकी overpopulation and unemployability, and they're interrelated only. अगर population ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं unemployability भी होगी. So it's not like actually possible for the government to provide opportunities to such a huge population, and government is actually feeling the heat. The government is actually feeling the heat because it is not able to create job opportunities for such a huge population. And this problem of unemployability and overpopulation is more in emerging economies such as India. So, and practically speaking, it is not possible for the government, किसी भी government के लिए possible नहीं है इतनी बड़ी population के लिए job opportunities provide करना to the entire population. 1.35 billion is the population of India. So it's not possible to create the jobs for each and every individual. So what is the solution? What is the way out from there? So that is the promoting startups, encouraging entrepreneurial activities, and fostering entrepreneurial culture is the only way out of this predicament. And that is why, if you see over the last 7, 8, 9 years, there has been a lot of emphasis on creating job opportunities through self-employment. There has been more emphasis on being job givers rather than job seekers. So that is why government is giving a lot of emphasis on entrepreneurship, on start. If you talk about the scheme, there is Mudra Loan Yojana, there is Startup Stand Up India. So a lot of initiatives has been taken to promote these kind of things in India as well. Okay, now moving to the next one, personality traits of a successful entrepreneur. If we discuss about MSMEs, if we discuss about startups, we cannot actually have a discussion without discussing about entrepreneurs, because they are the individuals who are the risk takers. They are individuals who start a unit. They are the individuals, चाहे आप MSMEs की बात करो, चाहे आप startups की बात करो, जो risk ले करके units को start कर रहे हैं, they are the entrepreneurs. So there are actually number of traits. We sometimes we call those personality traits, sometimes we call those entrepreneur traits. बहुत सारे traits हैं which we relate with these individuals, कि ये traits अगर आपके अंदर हैं तो there are more chances that you can become a successful entrepreneur. बहुत सारे traits हैं. I have only taken 6 or 7. I have multiple papers. If you want, you can read my research papers. This is my research area: personality traits, entrepreneurship. So I've just taken 5, 6 important traits. There are, I think, 15, 20, 25 traits. So these are the popular traits. So before going into the traits, there is a question कि ये जो personality traits हैं which are required to be a successful entrepreneur, whether these traits, these personality traits are inborn, मतलब आपको गॉड गिफ्ट ही है या बचपन से ही आपके अंदर रहती हैं ये सारी चीजें, या फिर these can be developed with the passage of time, with education, with practice and all. So there is a lot of debate on this. बहुत debate इसके ऊपर हुआ है कि नहीं, there is one school of thought which believes that these traits are inborn. They are innate, they are the part of personality. You cannot develop these traits कितना भी आप प्रैक्टिस कर लें. बट देयर इज अदर स्कूल ऑफ थॉट, वो बिलीव करते हैं कि नहीं, अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप practice करते हैं, तो these traits can be developed with the passage of time. Okay, so one of the most important trait which we relate with the successful entrepreneurs is need for achievement.
So what is need for achievement? Need for achievement की बात करते हैं तो we have this individuals मैकलेंड्स की याद आती है 1961 के, उनके बहुत सारे स्टडीज हैं, इंडिया में आके उन्होंने स्टडीज की थी. तो ही emphasized on three types of things: need for achievement, need for power and need for affiliation. So here we are discussing about need for achievement. जो जो इंडिविजुअल्स जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है उनके क्या ट्रेट्स हैं. लेट्स हैव अ स्मॉल discussion on that. So need for achievement, it is a personality traits that refers to an individual's inclination for significant accomplishment and setting high benchmarks of performance. Individuals with higher need for achievement have a strong determination to accomplish difficult tasks and excel in all their endeavors. Individuals with higher desires and ambitions to succeed have much higher propensity to get involved in entrepreneurial ventures. So ये सारी जो traits जिनके अंदर होती हैं, तो there is higher chances that they might do well, they might get used to this entrepreneurial culture, entrepreneurial ventures and all those things. It is a desire to be successful and willingness to accept genuine and honest criticism for self development. तो ये succeed भी होना चाहते हैं, but at the same time they accept criticism. ऐसा नहीं है कि आप इनकी बुराई करोगे तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे. ये they are very open to the criticism as well because they want to improve constantly. इसी वजह से जहां कमी भी रह गई है, they are very open to that. So these are the individuals who have high need for achievement. Then there is a trait which is known as the locus of control. अब लोकस ऑफ कंट्रोल में दो चीजें हैं, एक है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. अब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको लगता है कि उनके एक्शंस जो भी हैं, जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, उससे वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं. जो भी चीजें हो रही, इवेंट्स हो रही हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं उसको. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वो होता है जिनको लगता है कि वो कुछ भी कर लें, सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं और वो ज्यादातर डेस्टिनी, लक, किस्मत, इन सारी चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं. तो वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनका हाई है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसके वजह से वो डेस्टिनी अपनी बना रहे हैं, rather than कि वो डिपेंडेंट है कि मेरी डेस्टिनी लक पे डिपेंड करती है. So that is what locus of control is. Okay. Self-efficacy is basically, it is an individual's belief in his own capacity to execute behaviors necessary to produce a specific performance. अब सेल्फ एफिकेसी और लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन सेल्फ एफिकेसी में परसेप्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. परसेप्शन इन द सेंस, अगर आप परसीव करते हो कि आप कोई भी एक्शन लोगे उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा तो आप अच्छा करोगे. परसेप्शन अगर आपका चेंज होता है या आप थोड़े से डाइसी सोचते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपका एफर्ट भी उतना ज्यादा नहीं जाता है. तो सेल्फ एफिकेसी में है कि आपके बिलीफ्स, आपका परसेप्शन आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है. दैट इज व्हाट सेल्फ एफिकेसी इज. देन इनोवेटिवनेस, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है. So I'm not going into this innovation. Proactiveness. So what is proactiveness? It's like being one step ahead of others. So whatever is there in the environment, आप उसको पहले से ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो, उसके हिसाब से यू ट्राई टू मेक सम एडजस्टमेंट्स. दैट इज बेसिकली प्रोएक्टिवनेस. सो इट इज द ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल which prepares him to face and control an unexpected situation. So it is a tendency to take actions that influences surrounding environment. So that is what proactiveness is. So entrepreneurship में भी you have to be proactive, you have to be one step ahead. That means कि आपको अपॉर्चुनिटी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई भी है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एक्सटर्नल दैट अपॉर्चुनिटी बिफोर अदर्स. क्योंकि अगर और लोग भी उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यू विल नॉट बी द फर्स्ट मूवर. और जो भी फर्स्ट मूवर होता है उसी को हमेशा एडवांटेज मिलता है. कोई भी प्रोडक्ट की बात करो, कुछ भी करो, अगर आप फर्स्ट मूवर हो तो हमेशा प्रॉफिट्स आप ज्यादा लेके जाओगे. सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मूवर होता है तो ऑलरेडी आपने काफी प्रॉफिट एब्जॉर्व कर लिया उस इंडस्ट्री में, तो वो देयर विल बी फॉलोअर्स, बट फर्स्ट मूवर का हमेशा एडवांटेज होता है. And next is perseverance. So this is a trait actually not only in entrepreneurship, ये हर जगह इस trait का importance है. This trait is actually required in all the places. So what is perseverance?
कुछ भी हो जाए, you never give up. It's a never say die attitude, and you try and try and try. अब तब तक लगे रहते हो जब तक आपको अपना लक्ष्य पूरा नहीं मिल जाता. So perseverance is that. So you keep on trying, you keep on trying, you never give up. So again, if this kind of attitude is there, तो फिर obviously whether it's an entrepreneurship का field या कहीं का, you will eventually succeed. So that is perseverance. Okay. So these are few of the traits. There are more traits, but I have picked these 6 only. You can read a few of the research papers if you want to have a better understanding of other personality traits which impacts entrepreneur intentions or which impacts firm performance. Okay. Okay. Now let's come to the major part. Let's discuss about what are startups and what are startup enablers. So startup enablers, when we talk about startup enablers, so anyone whose activities actually promotes the growth of startups, that can be considered as an startup enabler. So we have usually these 5 things which we actually say that these are the startup enablers. That includes your investors, mentors, incubators, accelerators, and government bodies. So we'll discuss each one by one. So let's start with investors. So who are the investors? So when you talk about investors, they basically include your angel investors and venture capital funds. अभी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, आर दे सेम या कोई डिफरेंस है? तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दी, बिकॉज इन्वेस्टर्स में यही दो पार्टी है, वन इज योर venture capitalist and one is your angel investors. So let's see how they are different. We'll compare these two. सो what who are angel investors? So angel investors को हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, सीड इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, एंजल फंडर्स भी कहते हैं. सो दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? जिनके पास बहुत पैसा होता है. सो दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स who are basically providing financial backing for small startups or these entrepreneurs in exchange of ownership equity. उनके business में they have the ownership. And basically these angel investors, they sometimes it can be found in the family of an entrepreneur, sometimes they can be friend, sometimes can be a common individual who is a friend of friend. इस तरीके से generally they approach and help, give a helping hand to the starting entrepreneurs. The funds that angel investors provide may be a one time investment to a business, or constantly they can be injecting money to any business so that it can actually get out of the difficult situation. So that is what your angel investors are. Now let's talk about few of the popular angel investors in India. बहुत लोग हैं, but let's talk about few of the popular angel investors. You have Rajan Anandan, he's the managing director of CQ Capital. You have Anupam Mittal, he's the founder and CEO of People Group. You have TV Mohandas Pai, he's the chairman of Manipal Global Education. He was also the former director of Infosys. Grish Mathrubhutam, he's the CEO of Freshworks. Dheeraj Jain, director of Red Cliffs Capital. So these are few of the popular, you can say, angel investors who are active in India and giving their help to various startups. Now coming to venture capitalist. Now who are, I think venture capitalist word आपने ज़्यादा सुना होगा, ज़्यादा popular है when we hear the term startups and कोई new business and all those things. तो venture capital word काफी popular होगा. Those who are not from the commerce or the finance background also उन्होंने ये word काफी बार सुना होगा, venture capitalist. So what is venture capitalist? A venture capitalist is a private equity investor that provides capital to companies with high growth potential in exchange for equity stake. अब कुछ पॉपुलर वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो यू हैव द सीक्वो कैपिटल, एसेल, ब्लूम वेंचर्स, एलिवेशन कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट. तो अगर आप देखो, एक चीज तो बहुत कॉमन है कि जब मैंने ये एंजल इन्वेस्टर्स की बात की थी, वहां मैंने इंडिविजुअल्स का नाम लिया था. वेंचर कैपिटलिस्ट की बात कर रहा हूं तो आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द फर्म्स. सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल and your angel investors. So individual investors who are often successful businessmen, they are usually the angel investors. And venture capitalists, most of the times we can say they are the professionally managed public or private firm. They are the venture capital firms, उनको कहते हैं. इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो अगर इंडिविजुअल बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो
जो इन्वेस्टमेंट साइज होगा उसकी कैपेसिटी होगी। तो आपके एंजल इन्वेस्टर्स जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर उतना नहीं इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ फर्म, तो इज अ कंपनी, सो वहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट जो ज्यादा होती है। अब पैसा बेसिकली आता कहाँ से है? जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स है वो अपना पर्सनल जो भी उनकी सेविंग होती है, उनका खुद का पैसा होता है वो लगाते हैं। आपका वेंचर कैपिटलिस्ट दैट इज अ कंपनी, दे पूल मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, फंड्स, फाउंडेशंस, और उसके बेसिस पे दे आर मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट। वन मोर डिफरेंस इज योर angel investors are taking a bit more risk because they are making investment at the pre-revenue business, and your venture capitalists are making investment at the pre-profitability business. अब I think you have to understand between revenue and profitability के बीच में क्या difference है। revenue से बेसिकली जब आप सेल्स करते हो तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब रेवेन्यू ऐसी चीज है जो रेगुलर होती है, नेचर में रिकरिंग होती है। लेट्स से अगर कोई कपड़े की फैक्ट्री है और आप कपड़ा सेल कर रहे हो तो उसको सेल करके आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। और प्रॉफिट का मतलब है कि आपके रेवेन्यू में से अगर आपका एक्सपेंस निकाल दिया जाए या कॉस्ट निकाल दिया जाए तो आपका प्रॉफिट बचता है। तो वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट। तो अगर हम एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो प्री रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होना शुरू हुआ है उस स्टेज पे वो इन्वेस्ट करते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो रेवेन्यू तो स्टार्ट हुआ है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज पे नहीं पहुंचे, वो स्टेज पे करते हैं। तो रिस्क जो है एंजल इन्वेस्टर्स का कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वो रेवेन्यू स्टार्ट होने से पहले ही इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, कर रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द अदर डिफरेंसेस बिटवीन, मतलब दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट बट यूजुअली दिस इज द स्टेज वेयर द एंजल इन्वेस्टर्स कम इनटू पिक्चर। एंड स्क्रीनिंग कैसे करते हैं प्रपोजल्स की? अब अगर एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो सारा का सारा जो है अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए दे स्क्रीन दी प्रपोजल्स कि हाँ ठीक है यहाँ मैं पैसा लगा सकता हूँ। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली कंपनी है, दे हैव a team of experts, they will actually screen the proposals और then they will take a decision कि यहाँ पैसा डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता है। So that is how angel investors and venture capitalists are different. Okay, now the next one is your mentors. अब हु आर मेंटर्स? मेंटर्स आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड। जो भी आपको गाइड करता हो, जो भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हो, आपको नॉलेज देता हो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेंटर। सो यहाँ भी वही चीज है, एनी एक्सपीरियंस पर्सन who wish to impart knowledge to startups and guide them for success, that can be, they can be considered as mentors. Okay, अब अगर पॉपुलर मेंटर्स की बात करें जो स्टार्टअप में इंडिया में काफी एक्टिव हैं, तो उसमें आपका अमित चौधरी का नाम, हु इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस स्नैपडील। देन यू हैव रमन रॉय, ही इज द चेयरमैन ऑफ क्वाट्रो। वैभव दयाल, को फाउंडर प्रिम रिजॉर्ट्स। then you have Yogesh Andle, co-founder of Nuclear Software. These are the popular mentors who are very active in the India. So they are the mentors. Then next you have the incubators. कभी कभी incubators और accelerators को लेके काफी confusion होता है कि incubators कौन होते हैं startup enablers में and accelerators कौन होते हैं। तो let's see what is the difference between these two and who are the incubators, who are the accelerators. इंक्यूबेटर वर्ड अगर आप देखते होगे तो एफएमएस बीएचयू में भी आपका एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेटर की जरूरत किसको पड़ती है? जो बहुत इनफैन अपने एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं उनको आप इंक्यूबेट करते हो, उनको आप प्रोटेक्ट करते हो, उनको नर्चर करते हो। तो इंक्यूबेटर का काम होता है कि बहुत स्टार्टिंग स्टेज में अगर कोई बिजनेस है उसको आप नर्चर करोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे, फिर उसको बढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करोगे। दैट इज द मेन रोल ऑफ इंक्यूबेटर। एक्सेलेट कौन कर सकता है? जो ऑलरेडी चलना शुरू कर चुका वही तो एक्सेलेट करेगा, वही तो दौड़ पाएगा। जो अभी जन्म लिया है या जो अभी बहुत, जिसकी स्थिति अभी बहुत नाजुक है, वो तो दौड़ नहीं सकता है। तो एक्सेलेटर का काम होता है बिजनेस को और स्केल करना। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इंक्यूबेटर्स एंड व्हाट इज देयर रोल। तो incubators are the organizations that provide entrepreneurs and early stage startups. Now, this is the key word here, early stage startups with advice, with resources and connections so as to help them turn their idea into a self-sustaining business. तो यहाँ पे हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, विथ रिसोर्सेज, विथ एडवाइसेस। मेंटर्स खाली आपको नॉलेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन इनक्यूबेटर्स, दे प्रोवाइड यू एडवाइस, दे प्रोवाइड यू रिसोर्सेज, दे प्रोवाइड यू कनेक्शंस, ऑल दोस थिंग्स।
नाउ एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर इंक्यूबेटर्स इन इंडिया, बीएचयू में भी आपका एक इंक्यूबेटर है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपने देखा होगा। और इसके अलावा अगर पॉपुलर इंक्यूबेटर्स की बात करें एट नेशनल लेवल, तो यू हैव द सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज आईएम अहमदाबाद का है। इंडियन एंजल नेटवर्क, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, Center for Entrepreneurship and Innovation. There are many. I have just noted few of the popular ones. Okay. Now coming to the accelerators. What are accelerators? Okay. So organizations that help catalyze the growth of existing startups. जो already startup exist कर रहा है, उसको कुछ समय हो चुका है, उसकी ग्रोथ को कैटलाइज करना, उसकी ग्रोथ को एक मोमेंटम देना, वो आपका एक्सीलेटर का काम है। तो एक आप नए स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप एक एग्जिस्टिंग स्टार्टअप की बात कर रहे हो जो मे दैट मे बी देयर फॉर 4 5 6 7 years मे बी। सो उसको आप किस तरीके से तेजी से ग्रो कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो उसके बिजनेस का, दैट इज द रोल ऑफ द एक्सीलेटर। तो यहाँ पे बेसिकली समटाइम्स दे हेल्प देम a company which is there for some time to get IPO, that is initial public offering, that is कॉमन पब्लिक से आप कैसे शेयर परचेज करवा सकते हैं, उस लेवल तक लेके जाने की जो जर्नी है, या वो आपके एक्सीलेटर भी काम करते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ द एक्सीलेटर्स। सो सम ऑफ द पॉपुलर एक्सीलेटर्स इन इंडिया आर Catalyzer, Fremont Partners, GSF Accelerators, Health Start, I Accelerators. These are some of the populars. बहुत हैं. These are the top ones. Okay. Now, finally, the government body. So the role of government, you have seen there is a lot of thrust on promoting startups, on promoting entrepreneurial culture. So government is constantly trying to bring this kind of culture in India as well. Okay. So this is your startup enablers. The next one is how do investors add value to the startups? Investors startups को किस तरह से more valuable बनाते हैं? That is we are going to discuss in this particular slide. So जब हम investors की बात करते हैं, we are primarily emphasizing on the venture capitalist. Okay, इसलिए मैं कह रहा था कि venture capitalist word आपने ज़्यादा सुना होगा in relation to new business, in relation to a startup, in relation to a risky business as well. They take a lot of risk. Okay, so the first one is stakeholder management. So investors manage the company board and leadership to facilitate smooth operations of the startup. In addition, their functional experience and domain knowledge of working and investing with startups imparts vision and direction to the company. तो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, दैट द वेंचर कैपिटलिस्ट डू फॉर द न्यू कंपनीज, फॉर द न्यू स्टार्टअप्स। रेजिंग फंड्स, फंड रेज करने के लिए, सो इन्वेस्टर्स आर द बेस्ट गाइड्स फॉर स्टार्टअप टू रेज सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ आपका स्टार्टअप किस स्टेज पे है, मैच्योरिटी सेक्टर, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दे विल हेल्प यू इन रेजिंग फंड्स, एंड दे विल ऑल्सो हेल्प इन नेटवर्किंग, कनेक्शन बिल्डिंग, टू पिच योर आइडिया टू डिफरेंट पार्टीज, ऑल दोस थिंग्स। सो ये सारी चीजें इफेक्टिवली आप वेंचर कैपिटलिस्ट के हेल्प के थ्रू कर सकते हो जो आपका स्टार्टअप होता है। Then recurring talent, hiring activities. Any day your organization is actually dependent on the personals you hire. आप देखो बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनीज होती हैं, दे आर गोइंग टू द बेस्ट बी स्कूल्स, दे आर गोइंग टू द IITs टू हायर, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन दिस रिक्रूटमेंट. So why they are spending a lot on this recruitment? Because they know that the individuals are the key. अगर आप अच्छे individuals को recruit करोगे तो you can actually scale the size of your organization. So recruiting the right talent is very important. So sourcing high quality and best human fit capital is critical for not only for startups but for any organization. But startups अभी जो स्टार्ट कर रहा है वहां पे सही इंडिविजुअल्स का होना बहुत बहुत जरूरी होता है, और स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है, देयर आर लिमिटेड पोस्ट जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो जो पोस्ट है उस इंडिविजुअल्स को लेके आना इज अ वेरी वेरी important as well as very like risky thing. So that is recruiting talents जो है वो this VCs will help. Then marketing in the sense they will assist with the marketing strategy, they will assist with how to market the product, service, or whatever things that is. Merger and acquisition activity,
Now in the present scenario, a lot of mergers and acquisitions are going around. You will कहीं ना कहीं कभी आप 1-2 साल पहले आप बैंक्स की बात अगर करो, वहां बहुत सारे मर्जर्स हुए, कोई ना कोई मर्जर्स एक्विजिशंस हर साल चलते ही रहते हैं. तो बेसिकली दीज वेंचर कैपिटलिस्ट दे कीप एन आई ऑन द थिंग्स गोइंग ऑन इन द बिजनेस वर्ल्ड. कौन सी कंपनी किसको एक्वायर कर रही है, कहाँ मर्जर हो रहे हैं, ये सारी चीजें. And they will help actually these local entrepreneur ecosystem to enable greater value with addition to the business through in. अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हो, मर्ज कर जाते हो, तो आप इनऑर्गेनिकली तेजी से ग्रो कर सकते हो rather than starting from scratch if you are having some funding. So actually it's better to go and take over some company and then grow. जो आपका ग्रोथ होगा वो ज्यादा एक्सलेटेड होगा. देन ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग. तो स्टार्ट हुआ अपने एक छोटे बिजनेस के साथ, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि आपका बिजनेस का साइज बढ़ेगा. तो जब साइज बढ़ता है तो स्ट्रक्चरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर बिजनेस आप उसी मॉडल पे चला रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेम है, तो हर लेवल पे वही रहना चाहिए. तो विद द साइज एंड स्कोप सब चीज बढ़ती है, तो आपकी स्ट्रक्चरिंग की जरूरत होती है. तो इसको हम रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग. तो उसमें भी आपके वेंचर कैपिटलिस्ट जो है दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. So this is how they add value to the startups. Then why do investors invest in startups? Now this is a very important and very क्वेश्चन टू पॉन्डर अपॉन कि क्यों कोई भी इन्वेस्टर जो है वो स्टार्टअप में पैसा लगाता है. व्हाट इज द रीजन? तो उसके पास पैसा वो कहीं भी लगा सकता है, स्टॉक मार्केट में लगा दे पैसा, बैंक में डाल दे, पोस्ट ऑफिस में डाल दे, कहीं डाल दे, क्यों स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है? तो अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन देयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट्स सी फ्यू ऑफ द फिगर्स कि क्यों वो पैसा स्टार्टअप में डालते हैं. तो इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स इज डेफिनेटली इट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन. क्योंकि जो बिजनेस है वो अभी नया है, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें उसके साथ लगी हुई हैं. लेकिन ये भी बात सही है कि वहां पे आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं दे कैन बी एक्चुअली मच मोर देन द अदर ट्रेडिशनल एवेन्यूज वेयर यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट. तो थॉमसन रॉयटर्स का आई थिंक आपने नाम सुना होगा. तो थॉमसन रॉयटर्स वेंचर कैपिटल रिसर्च इंडेक्स, दे रिप्लिकेटेड द परफॉर्मेंस ऑफ वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री इन 2012, and the overall venture capital has returned at an annual rate of 20% since 1996. जो रिटर्न मिला उसमें 20%, which is actually much more than the modest returns if you compare the equities and bonds जहाँ पे 7.5 5.9 इस तरह का रिटर्न था. This was actually more than twice. So इस तरह से रिटर्न काफी ज्यादा है इस तरह में businesses में. तो that is why venture capitalists they invest in these kind of businesses so that they can grow their money in a very short period of time. But again, higher the return, higher the risks. फाइनेंस का बेसिक कंसेप्ट है. अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा. पोस्ट ऑफिस में आप पैसा डालोगे, आपका श्योरिटी है, आपको पैसा मिलेगा, बैंक में भी मिलेगा. आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए. बट यूजली देयर आर मच मोर सेफर एवेन्यूज जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हो. बट अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट की आप बात करो, कितना आपको मिलता है? 6%, 7%, 8%. द सेम इज इन पोस्ट ऑफिस एज वेल. स्टॉक मार्केट में कंपेरेटिवली हाई है, बट वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है, नहीं भी मिल सकता है. तो रिस्क अगर आप ज्यादा लोगे तो डेफिनेटली रिटर्न भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज योर स्टार्टअप इकोसिस्टम. अब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है. इकोसिस्टम इज नॉट जस्ट वन प्लेयर, उसमें कई कई सारी चीजें हो जाती हैं. सो दैट इंक्लूड्स योर स्टार्टअप, इट इंक्लूड्स द इनेबलर्स, इट इंक्लूड्स द इकोसिस्टम पार्टनर्स. सो देयर इज अ buzzword going around this: what is a startup, what is startup ecosystem, all those things. So what is a startup? So basically this is a high growth fueled business विच डिसरप्ट्स द इंडस्ट्री. जिसकी एंट्री होने से पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ ना कुछ डिसरप्शन हो जाता है. एंड वेरी पॉपुलर एग्जांपल्स आर उबेर. उबेर में जैसे बिजनेस में आया, इट एक्चुअली चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री. उसी तरह से एयरबिन, उसी तरह से स्नैपचैट. तो ये सारी जो कंपनीज हैं, दे स्विगी को भी आप ले सकते हो, ये सारी चीज जब ये इंटर किए तो दे एक्चुअली चेंज द थिंग्स इन देयर पर्टिकुलर इंडस्ट्री. So these are the startups. We can say the features, typical features of the startups. Enablers, we have already discussed what are enablers. They include accelerators, incubators, all those things. So I'm not going into that.
And ecosystem partners, they will include the government, the corporation, the service providers. So I think we have already had a discussion about these all things. So let's move next. So what are the elements of startup ecosystem? Now, when we talk about ecosystem, so there are certain elements. Without these things, a ecosystem cannot actually be effective, cannot prosper much. So let's have a discussion on what are these elements. The first one is your problems and ideas. So a startup ecosystem, it cannot exist without new problems and ideas. The businesses in the ecosystem must constantly innovate and create new products and services to solve these problems. तो कोई भी चीज आप लेके आते हो मार्केट में, प्रोडक्ट ही लेके आते हो, तो every product is a solution to a particular problem. तो आपको कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू है, इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, यू ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, जेन्युइन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम फॉर कस्टमर, तो कहीं ना कहीं देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो स्टार्टअप है, दैट विल एक्चुअली स्केल higher. ठीक है? So if you should try to provide solutions to the problem of the customers. Then entrepreneurs. So we already had discussion on this. These are the people with ideas who drive to make these ideas a reality. So we have discussed about the traits and all those things. So they are the actually lifeblood of this ecosystem, because यही आपके स्टार्टअप्स को रन करते हैं. मेजर ड्राइवर्स ऑफ दिस स्टार्टअप्स आर दी इंडिविजुअल्स बिहाइंड दिस स्टार्टअप्स. दे आर द एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट करते हैं इस तरह के बिजनेसेस को. तो दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ दिस स्टार्टअप्स. Then the investors की बात करें तो they are actually the individuals who provide the financial backing for the startup to grow. So they are taking high amount of risk by investing in these businesses, but they are taking risk because they expect a high amount of payoff. They expect a high amount of payoff from these businesses. Then the people, a business or a startup, it cannot start without the right people with the right mindset and all. That is why we discuss about the proper hiring and all those things. So the people in this ecosystem must be able to provide the talent. They should have the requisite set of skills. They should have the resources that the startup needs to grow, needs to scale. So all those things should be there. They include startup founders, they include employees, investors, mentors, service providers. People की बात करें तो ये सारे लोग उसी में आ जाएंगे. Then capital, सबसे important. Capital is the fuel that powers a startup. बिना capital के आप कुछ नहीं कर सकते. तो that's like a fuel for the entire system. So it allows a business or a startup to expand, to hire new employees, to grow. कुछ भी करोगे उसके लिए आपको capital की जरूरत है. बिना capital के you cannot think of a business. Next in that is infrastructure. So if you want talking about a startup, talking about a typical business, infrastructure support सबको चाहिए. अब infrastructure में क्या आता है? You have you talk about this office space, meeting space, networks, bandwidth. ये सारी चीजें infrastructure, मतलब आपके business को चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए. That is basically the infrastructure. Physical infrastructure में आपको office space, meeting space ये सारी हो जाएंगी. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो नेटवर्क्स, बैंडविड्थ, ये सारी चीजें हो जाएंगी. देन द नेक्स्ट इज सर्विसेज. The startup ecosystem must have access to necessary services to function effectively. अब ये services में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? You should have access to लीगल सर्विसेज. आपके पास सेट ऑफ, क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, तो यू नीड अ सेट ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स. सो दे प्रोवाइड यू दी लीगल सर्विसेज. सो दैट इज वन थिंग. अकाउंटिंग की चीजें होनी चाहिए, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करना है, तो वहां पे आप you need chartered accountants on all those things. Banking services. So these are services which are a necessary part of any organization. Okay. Now, what makes a startup ecosystem thrive? किस तरीके से या क्या चीजें हैं जो आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम को तेजी से ग्रो करने में हेल्प करते हैं? सो देयर आर फोर थिंग्स हियर व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. इज द क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. बेसिकली ही इज द individual who is running everything.
the amount of capital available, we have already discussed these things, the capital, the quality of the supporting infrastructure and the services, the health of the economy. अब इन चारों चीजों को sum up करने की कोशिश करें तो basically in simple terms we can say that a startup ecosystem thrives when the society encourages entrepreneurs to solve problems with disruptive solutions. That's the first and foremost thing. Investors consider startups to be a lucrative investment. That's the second thing. तभी पैसा आएगा. People find ways to make money by providing infrastructure and service to startups. Infrastructural support अच्छा मिले. And the last one is the government creates an environment that is conducive to innovation and entrepreneurship. Government का support मिले, conducive environment मिले to thrive and all those things. So that is how a startup ecosystem can thrive. That is how an startup ecosystem can actually grow very quickly. These are the things that is very important. Okay, now coming to this word unicorn. Unicorn, all of a sudden this word has become very popular in the startup ecosystem. तो अभी बहुत पुराना वर्ड तो नहीं है, स्टार्टअप्स की वजह से ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया है. तो देयर इज एक बाइक आती थी यूनिकॉर्न नाम से. तो बट स्टार्टअप में लास्ट 3-4 years में दिस वर्ड हैज बिकम वेरी पॉपुलर. सो व्हाट आर एक्चुअली यूनिकॉर्न्स? एवरी स्टार्टअप दे हैव अ ड्रीम टू बिकम एन यूनिकॉर्न. क्यों बनना चाहते हैं यूनिकॉर्न? सो लेट्स सी व्हाट इज यूनिकॉर्न. सो रिसेंटली द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया इट क्रॉस्ड 100. अभी कुछ आई थिंक 21 में ही शायद, आई थिंक लास्ट ईयर इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स हो गए. सो unicorn means it is a startup of at least rupees 7,500 crore turnover. 7,500 करोड़ का टर्नओवर अगर है तो it can be considered as a unicorn. That's a very huge amount. And the total valuation of these unicorns in India, it is 330 billion US dollars, which is equivalent to rupees 25 lakh crore. So 25 lakh crore India के unicorns का total valuation, which is a very huge amount. So अगर growth rate की बात करें Indian unicorns की, so that is actually more than the growth rate that is prevalent in United States, that is prevalent in United Kingdom and many other countries. So India में unicorns का growth rate is actually phenomenal. And that it is any privately owned firm with a market capitalization of 1 billion USD. 1 billion USD अगर टेकिंग की एक डॉलर में 75 रुपीज हैं तो हम कह सकते हैं कि 7,500 करोड़ इस वजह से बोल रहे हैं. ओके, सो they have different categories. They have different categories. It can be fintech, it can be edtech, it can be B2B. आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल दोज थिंग्स यू विल सी लॉट ऑफ जो भी यूनिकॉर्न्स हैं दे आर बेसिकली एडटेक एंड फिनटेक बेस्ड ही हैं. आप ज़्यादातर देखोगे तो बिना टेक्नोलॉजी के आज के डेट में सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑल मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स आर कैपिटलाइजिंग ऑन दिस फ्रंट ओनली. So they are basically offering creative solutions and new business models. So that is one of the characteristics of the unicorns. Okay, so now let's discuss about few of the features कि क्या what it takes to be a unicorn, या unicorn के बारे में क्या special होता है, कि क्या सारी चीजें हम relate कर सकते हैं unicorns के साथ या identify कर सकते हैं. So the first thing is disruptive innovation. So what is disruptive innovation? Mostly all the unicorns have brought a disruption in the field they belong to. For example, Uber का मैंने example लिया है, that has transformed commuting. So that has brought a disruption. Similarly, you can say Swiggy and all, they have brought a disruption in terms of food delivery. So it should bring disruption in the field in which they belong. That is one of the things. Then technology driven. This I already discussed. So the business model is driven by the latest technological innovations and trends. So आज के date में in this because after COVID you cannot think of things without technology. Okay, consumer focused. Third is your consumer focus. Their goal is to simplify things for consumers and be part of their day-to-day life. You have to make life easier for customers.
उनका पेन आपको कम करना है, उनके लिए लाइफ आपको इजी करनी है, सो दैट they can have all the things at their comfort. So that is one thing, they should be consumer focused. Marketing का भी concept कहता है कि customer is the king, so you have to take customer at the center of the things, then only you can actually succeed. Then affordability, keeping things affordable is another key highlight of these startups. Customer को तो फोकस में करना ही है, बट इट शुड बी अफोर्डेबल एज वेल, कस्टमर्स को अफोर्ड कर पाए तभी यू कैन एक्चुअली ग्रो क्विकली. अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच टू द कस्टमर, ऑल द कस्टमर्स, सारे ग्रुप्स को आप टारगेट नहीं कर पाओगे. Privately owned, most of the unicorns are privately owned, which gets their valuation bigger when an established company invests in it. ठीक है. सो प्राइवेटली ओन्ड है, जब आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू जाते हो तो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द वैल्यूएशन इन दैट केस. And software waste, this we were discussing. A recent report suggests that 87% of the unicorns products are software, 7% are hardware, and 6% are other products. So 87% जो products हैं unicorns के, they are basically software based. So this is the era of technology. इसमें there is no way, other way going around this. Okay, so now the next one is, what are the growth drivers for Indian unicorns? So now we have just discussed कि जो growth rate है Indian unicorns का, that is actually much more than the unicorns in United States, in United Kingdom and other parts of the world. So क्यों Indian unicorns बहुत तेजी से grow कर रहे हैं? And if we take the data of last 3-4 years, especially after COVID, हम देखते हैं तो बहुत तेजी से unicorns emerge किए हैं इंडिया में. So the first is your government support. So government of India, because India being an emerging economy with humongous population, India, the government has acknowledged that these startups, these entrepreneurs, these unicorns, they can actually help in providing employability to a large population. So that is why government is leaving no stones unturned in promoting these startups and promoting these unicorns. So government of India is understanding the value of working with disruptive innovators across the value chain and using their innovations to improve public service delivery. That is thing. Then adoption of digital services. Now after pandemic or during pandemic, the growth of these unicorns have accelerated because of the adoption of digital services by consumers, helping startups and new age ventures build tech focused businesses for customers. अगर आप देखो टेक्नोलॉजी का यूज जो हम प्री कोविड मतलब 2019 तक का देख लो शायद कम करते थे, लेकिन आफ्टर 2020, फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, सभी लोग जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं थे, नाउ वी आर यूजिंग मोर ऑफ टेक्नोलॉजी. चाहे वो पेमेंट एप्स हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे कोई भी चीज हो, बैंकिंग हो, हर चीज में वी आर नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन दीज टेक्नोलॉजी. देन डिजिटल पेमेंट्स that is okay, online services and work from home culture. So this is again because of COVID only. Because of COVID, this online services and work from home culture आ गया, लोग घर पे बैठ के काम करने लगे, तो इसका भी फायदा काफी यूनिकॉर्न्स ने उठाया. So many Indians move to online services, exploring a host of services ranging from food delivery to edutech to e-grocery. And work from home culture helped increase the number of startups, यूजर बेस, उनका स्टार्टअप का जो है यूजर बेस बढ़ गया एंड एक्सपेडिटेड देयर बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स, अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टर्स. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके यूनिकॉर्न्स के लिए दिस वाज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. उन्होंने बहुत, आप देखो जितने भी एडुटेक हैं बहुत सारे लोगों ने प्रॉस्पर किया, बायजूस की बात कर लो, बहुत सारे इस कोविड के टाइम में दे हैव एक्चुअली प्रॉस्पर्ड. Then digital payments, we already discussed कि अब now we are using ये फोन पे एंड ऑल दोज थिंग्स, पेटीएम एंड ऑल, शायद बहुत लोग नहीं यूज करते थे बिफोर दिस कोविड, बट आई थिंक नाउ फ्रॉम स्मॉल वेंडर से लेकर के सभी लोग इस एप्स को यूज कर रहे हैं. तो डिजिटल पेमेंट्स का जो है वो यूज ज्यादा हो रहा है. तो और जो आपके यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर एक्चुअली कैपिटलाइजिंग ऑन दैट एज वेल. सो द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अनदर एस्पेक्ट that aided the unicorn the most. And buyouts from major public corporations. So this is all about mergers and acquisitions. So many startups become unicorns as a result of buyouts from major public corporations. So
कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, they see a kind of business that is in line with that particular business, they take that business and they actually exponentially growth करने लगते हैं. So that is one of the things in which you can actually scale up your businesses very quickly. Okay, now let's see some of the Indian unicorns जो last 5, 6, 7 years में. Okay, so this table basically, can you see this table? Is it visible? Can you see Yes, the sir, it is visible. Okay, so these are some of the Indian unicorns. I have taken this data from CV Insights. 2019 का डेटा है, मुझे इससे लेटेस्ट मिला नहीं, थोड़ा सा पुराना है, 3 साल, but still it will serve its purpose. So these are some of the popular Indian unicorns. अगर आप देखो 15-16 unicorns हैं, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 तक के. यहाँ पे sector defined है and the valuation is there in US billion dollars. So you have the InMobi, Snapdeal, Ola Caps, 197 Communications, Hike, Shop Clues, Byju's. I was talking about this. Renew Power, Oyo Rooms, Swiggy, Zomato, Policy Bazaar, Udan, Buildesk, Delivery, Big Basket, Dream 11, Ola Electric Mobility, Revigo. These all have emerged in last 5, 6, 7 years. So these are the popular unicorns. ये 19 है, इसके बाद भी कुछ होंगे, but the current data I was not getting, so I have used this one. Okay, and then let's talk about the global cities by 5-year growth in venture capital deals. Now I've been talking कि इंडिया में वेंचर कैपिटल की बात करिए, यूनिकॉर्न्स की बात करिए, बहुत तेजी से पैसा आ रहा है, लोग बाहर से पैसा लगा रहे हैं और प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें दिस इज द टेबल विच actually puts it forward. This has been taken from Florida Hathaway 2018 survey. And this table talks about top global cities by 5-year growth in venture capital deals. जो ये आपका कॉलम है, यहाँ पे नंबर ऑफ डील्स के बारे में बात हो रही, कितने डील्स वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड किए. तो 2010 और 12 के बीच में अगर इस 2 साल का पीरियड देखिए तो ये these are numbers 9, 7 and all those things. The second one, it talks about the number of deals that struck in 2015 and 17 and period these 2 years. तो इन दोनों के बीच आप देखो 5 साल का गैप है. तो दिस इज अ कंपैरिजन टेबल, कंपैरेटिव टेबल. 2010 से 12 के बीच का एक स्लॉट लिया है और 2015 से 17 5 साल के बाद का स्लॉट लिया है. नंबर ऑफ डील्स की बात हो रही है. अगर बैंकॉक में देखो 9 डील्स थे 2010-12 में, देन 15-17 में थ्रू वेंचर कैपिटल दे आर 65. तो ग्रोथ परसेंटेज की अगर बात करें, परसेंटेज चेंज, तो 622%. अगर इंडियन सिटीज की बात करो, टॉप 40 यहाँ पे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 the name of Indian cities has been highlighted. Top 40 में you have 8 Indian cities that includes your Ahmedabad, Delhi, Bangalore, you have Mumbai, Calcutta, Pune, Hyderabad, Chennai. So all the major metropolitans of India, अगर आप देखो तो उसमें जो growth है that has been phenomenal as far as the venture capital deals are considered over a period of 5 years. That truly reflects that the venture capitalists are ready to put money into the Indian market, into the emerging Indian companies. Okay, so this tells that. Now let's come to the last one. This is the last slide. Conclusion and the way forward. So whatever we have discussed, we can just conclude it. So the future of the startup ecosystem in India, it will continue to span new trends. Startups from sectors like software as a service and the Internet of Things. So these are the emerging areas. They are seeing significant tractions from investors all over the world. So that is the first thing. Then the macro environment has hit the funding sentiments of the venture capitalists, resulting in fewer investments. Abhi ka jo macro environment hai, there is a Russia Ukraine war going, so that is one thing. Because of कोविड एंड ऑल, वो भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स पे कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट आता है. तो दैट इज, सो इन्वेस्टमेंट्स, तो इसको हम एक तरह से ब्लैक स्वैन इवेंट कह सकते हैं. दिस कोविड जो है ब्लैक स्वैन इवेंट कह सकते हैं. तो व्हाट इज ब्लैक स्वैन इवेंट? ब्लैक स्वैन का मतलब होता है this is something which is unpredictable and which might have severe consequences.
But again, this is something which is momentary, permanent nahi hai. This is just a transition phase. Isko passing phase kahiye. So the current challenging situation is a passing phase, and there is a lot of correction which is happening, and which would result in the best companies to stay afloat. जो companies strong हैं, जो stubborn हैं, tenacity जिनकी ज़्यादा है, they will be, their resilience जिनका ज़्यादा है, they will survive, and the weak ones जो है, they will subside eventually. So that's the rule everywhere. अभी कोविड के बाद जैसे जैसे चीजें थोड़ी नॉर्मल होंगी, तो बहुत सारी जो बड़ी कंपनी हैं, they will survive, but कुछ small companies who have emerged because of this COVID and all, उसमें कुछ players हैं वो धीरे धीरे they will subside. So this is the nature. And the role of ecosystem enablers, this presentation is all about what are enablers, what are their role, what is enabler ecosystem, all those things. तो उनका जो role है वो बहुत crucial है, because they are helping the early startups जो है वो incubate करते हैं, then they accelerate, they try to put increase the scale, IPOs and all those things. तो उनका जो role है बहुत important है. They act as a catalyst as well. So they have to continue playing a pivotal role for the startups. And Russian Ukraine war we have already discussed. इसके वजह से ये एक रीजन है जिस वजह से थोड़ा सा फंडिंग कम हो रहा है, एंड देन यूएस के जो फेड इंटरेस्ट रेट्स हैं दे हैव हाइक्ड, तो उसके वजह से भी देयर इज अ कंट्रोल मॉनेटरी फ्लो. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स which affect the economy. अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, आपने देखा था स्टॉक मार्केट ऑल ऑफ अ सडन काफी नीचे चला गया था, बट धीरे धीरे फिर चीजें ठीक हो रही हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप इनेबलर्स. सो थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Dear student, if you have any question to ask, please ask. Dear students, do you have any question? Anyone? Okay, Sir, then. Yes, please ask. sir, how important it is to be in an engineering field, because most of the unicorns in India are from entrepreneurs who were in the engineering field. So how important or not important it is? I'll not say that who is not from the engineering background cannot be a very success, cannot have a very successful startup, but the data says that most of the successful startups have been by the individuals who are from the engineering background. But if even if you're not from the engineering background, you there is nothing can stop you from actually learning. So startups, as you have seen, they are more software based, more technology based, and this is something which engineers are really good at. So if you are willing to learn, if you are willing to like explore things, it's nothing difficult. And apart from that, you can actually form a team if you are like not having very good in terms of technical things. So you can always have a team, so you can hire expertise in that, and you can actually take care of that part. Thank you, sir. Anyone else who have any question? Okay, thank you, students. Thank you, sir. The session was really instrumental for us in terms of innovation and entrepreneurship. And I have seen throughout the session that every attributes of the ecosystem has been explained well by you, and it will be really helpful for the other further endeavors of the students for the future. And I would like to take this opportunity to thank you on the behalf of Ministry of Education Innovation Cell, Institutions Innovation Council, Banaras Hindu University, and Design Innovation Center, BHU. Thank you, dear students, for participating in. Thank you so much. Have a good evening. Thank you so much. Thank you so much for providing me the opportunity. It was lovely interacting with the students. Thank you.